कल्चरल सेफगार्ड की स्पेशल प्रोडक्ट पई हमें कोन करिवो सेटा एप्लीकेबल टू बोथ डेवलप्ड कंट्री एज वेल एज नॉन डेवलप्ड कंट्री सेही टाइम रे जेतले जेहेतु डेवलप्ड एंड नॉन डेवलप्ड कंट्री पई थिला सेहि में चाइना आसिला चाइना कहला कि ना से माने होते डेवलप्ड कंट्री एंड वी आर डेवलपिंग कंट्री तो आमे जो जिंस ओडा तांकू दबु से माने सेतिरे जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पकेबे बट से माने जो जिंस ओडा आमकू देबे आमे सेतिरे इंपोर्ट ड्यूटी पकेबु जो थिरे कि तापरे धीरे धीरे आसला कि एसएसएम नै आसिले कि ठीक अछि जदि से मानकू तम टेम्पररी किछ गोटे बैरियर दरकार ता तमे एसएसएम यूज करि परियो इज दैट क्लियर Yes, sir. okay so 3 is also wrong Uruguay round no this is related to Nairobi so 3 is also wrong so only one okay now with reference to the international trade the Doha development agenda is related to providing interest-free finance to least developed country, introduction of lower trade barriers and revised trade rules, establish of mitigation fund for small island nation affected by climate change, a universal call to action end global poverty. See, ये सब जात्रा तो किसी होना दिला, correct no? Interest-free finance least developed country या विषय में किसी को बोलेगी ना, मु तो कहूँ थी ना चाइना कहूँ थी कि आमे जो जिनसे ओड़ा तब कहाँ को, अमेरिका को से माने 0% इंपोर्ट ड्यूटी लगे दरकार राइट lower trade barriers for the developed country who will import the product from developing country जदि developing country developed country to किसी जिनसे import करते they will give higher trade barriers correct no that's what revised trade barriers so B is correct हाँ कि नहीं सी गोटे एग्जांपल खाली मन रखा दोहा रिलेटेड चाइना एंड से गोटे मु जो देखौदिली से जो गोटे स्लाइड थिला राइट दैट वाज राइट लाइकली समथिंग लाइक इंडियन आइडल कि मते भी सुजोग मिलू आमे तो बहुत छोटो शहर रु आसु हमको चांस मिलू से माने बड़ करेक्ट सो दैट इज रिलेटेड टू दैट वन ओनली ओके होप इट इज क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, sir. consider the following organization of economic cooperation and development OECD Asian Pacific Economic Cooperation, Global System of Trade Preference, Asian Development. India is a member of which of the above? OECD रा member की India? OECD रा नुह. Okay, OECD रा नुह. D OECD रा answer. capital कोठी? माने I cannot capital. Paris. Okay. OECD. So OECD no then particular first the particular one particular eta particular then fine global system of trade preferences global system of trade preference anyone ठीक है कौन सी See, this is for developing countries. Developing country माने से start करते हैं. Okay. So in India is also coming under this developing country. So this is correct. Okay. Asia Pacific Economic Cooperation. Correct. Second, Asia Pacific Economic APEC. एपेक रो नुह सर. एपेक रो नुह. एपेक रो नुह right? And Asian Development Yes, Bank? तार अच्छी Asian Development Bank. Okay. So only 3 and 4. See again if such type of question comes, again I will go for 30:70. 30 people will be there out of 100 who will make it correct and 70 will be there who won't make it correct because maybe पारे तो मैं इधर कोटे दिटा ना भी न पढ़ी थे पारा. हाँ कि नहीं? Anyway. Yes sir. 3 टा जाना. Through option जदि आसला so basically तमे जानछो 1 टा तमे जानिछो कि at least OECD रा तो नुह. So in that you could able to eliminate 2 of the 4 options right. Now the remaining 2 you need to guess because for example global system trade preference जाननो Asia Pacific Economic Cooperation से अच्छी कि नहीं जदि क्लियर ना हो जदि क्लियर अच्छो देन ठीक जदि क्लियर ना हो ताले जदि क्लियर अच्छो कि नहीं इंडिया नहीं देन एटा तो आराम से तम काट दबो करेक्ट नो एंड जदि तमे क्लियर ना हो देन 50-50% you have to take a risk and मु आगरो भी कहितली कि ट्राई करो मॉक टेस्ट वगैरह दवा पे प्रॉपर मॉक टेस्ट ठीक अछि जो दिरे कि जदि तुमको लागु क्वेश्चन रा पैटर्न टफ अछि सो
try to attend more than 90 questions. Question ର pattern जदि tough अछि मु कहूची काहे कि बिकॉज़ तमर कमी जीवो ना जो कट ऑफ जीवो से कट ऑफ भी कम जीवो क्वेश्चन रो पैटर्न जदि टफ थियो कट ऑफ कम जीवो ना जीवोनी Yes, sir. तो भाबिनियो लेट सपोज कट ऑफ गला 75 and somehow you could able to attend but भाबिनियो क्वेश्चन रो पैटर्न एते टफ अछि तमे 30 टा क्वेश्चन ही अटेंड कलो and 30 टा क्वेश्चन भाबिनियो सी आगा फास्ट तो दरकार कि केते परसेंट एक्यूरेसी रे तमे अटेंड करू छ एमिति न कि तमु किछि आसनो एट लीस्ट 15 20 टा क्वेश्चन तो प्रॉपर्ली तमु आसनो जदि जेते भी कष्ट होइतले भी क्वेश्चन पेपर हाँ कि नहीं एमिति न कि सब तो क्वेश्चन फ्रेंड टॉप भी बनेबे तो तमु खोजियार अछि जदि पैटर्न टॉप अछि जदि तमु लागो जे फास्ट 5 6 टा क्वेश्चन तो पढुछ सेतिर 4 टा क्वेश्चन तमु जणा भी पडुनी त माने स्टार्ट करो खोजिबे कि कोडा जणा पडुची बिकॉज़ सेमिति रे भी क्वेश्चन जे तो पैटर्न टॉप अछि कट ऑफ कम जीवो तो जो गुडा आगो खोजि कि बाहर करो जो गुडा तमे करि परिबो इजी इजी क्वेश्चन गुडा आगो बाहर करि बाछि कि बाहर करो आन सेतिर तमरो भूल होगा कथा नहीं आन भाबिनो एमिति भाबि कि तमे क्वेश्चन बाहर करो लेट सपोज 25 टा रो भाबो 20 टा ठीक हैला आन 5 टा भूल हैला तो 20 दुने 40 6 5 30 राइट -3 लेट सपोज -6 हिसाब रे बोलुची करेक्ट तो तमरा आसिला 37 आन तमे भाबिला आउ किछि क्वेश्चन ही करबिनी मते आउ किछि आसुनी and suppose तुम कहले कि नहीं आउ 20 टा ट्राई करबी अटेंड करिया भाई 20 टा अटेंड करले केते मार्क आसे सी एमिति न कि 20 टा रे तुम किछि आसु न आइदर 4 टा ऑप्शन नु 2 टा ऑप्शन ले करेक्ट थिबो आउ 2 टा ऑप्शन आसु नथिबो या फिर गोटे आसुथिबो आउ 3 टा ऑप्शन जानि ही करनथिबो करेक्ट नु तो प्राय तो तुम देखिबो जो माने भी प्रीलिम माने दियंती से माने भी एई स्टैंडर्ड कहंती कि ट्राई करो फर्स्ट एक्यूरेसी देखिया पई जो गोडा इजी क्वेश्चन सेथिरे भूल न होवा दरकार सेकंड होची ट्राई करो मैक्सिमाइज करिया पई तमर नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू द क्वेश्चंस मु लिटरली कहूची मु जेते लास्ट टाइम प्रीलिम्स देथिले ओके एनीवे मोर सब तक सिलेबस कंप्लीट नथिला बट दैट इज फाइन मु कहूची डिफरेंस बिटवीन मु आ मोर फ्रेंड जे प्रीलिम क्लियर करथिला यूपीएससी रो एबे से मेंस लेखियो सो तार आसला 90 एंड मोर आसला 76 okay let's suppose cutoff is somewhere around 80 or 82 for OBC I'm not exactly sure so what happened is I attended 75 questions he attempted 90 I think 95 questions okay see question pattern will be same for me as well as for him also correct no because pair 1 pair 2 pair 3 pair 4 like that only question will come right हाँ कि नहीं तो भाबो जदी 75 रे मोर स्कोर आसला 76 मु जदी आ 20 टा क्वेश्चन अटेम्प्ट करथांदी राइट भाबिनियो 10 टा ठीक 10 टा भूल हेताना तो मते केते मार्क मिलताना जदी रैंडमली तो एमिति न कि 20 टा क्वेश्चन मु जानि ही नथली 20 टा क्वेश्चन जणा थिला बट सेथिरे मु जानि पार नथली कि केते ऑप्शन करेक्ट हो बोली बुझुथिले बुझुनी तमाने मु हेटी गेस करथांदी एंड जदी गेस रे जदी 10 टा ठीक हेताना और 10 टा भूल हेताना 50 50 भाबो ठीक अछि तो 10 दुणे 20 माइनस 6 14 मार्क मते एक्स्ट्रा मिलताना एंड जदी 14 मार्क मते मिलताना 76 प्लस 14 मोर भी 90 रहताना करेक्ट नो होंगे नहीं एमिति न तो 20 टा क्वेश्चन भूल हिजो कि Yes, sir. जदी 10 टा क्वेश्चन भी ठीक न हो कि जदी 5 टा क्वेश्चन ठीक 15 टा क्वेश्चन भूल 5 दुणे 10 1500 को 90 एट लीस्ट 1 मार्क तो एक्स्ट्रा होंगे नहीं so first you see how much you can attempt so basically तुम क्वेश्चन टाको स्कैन करियार अछि एंड ट्राई करो सेमिति 4 5 टा पेपर दियो मॉक टेस्ट दियो सेही बोला 4 5 टा पेपर एंड ट्राई करो ए एक्यूरेसी को बढ़ाया पे प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट बढ़ाया पे जेते अटेम्प्ट बढ़ेबो तो तमे सेति की सेफ रे रहिबो ओके बट एनीवे इट वोंट कम इन वन डे so you need to give 5 to 6 tests and this has to be in your mind to increase the attempt okay anyway so the next question consider the following statement department of investment and public asset management sorry दीपम कहाँ अंडर हमें देखिथिले मने पडुची Yes, Ministry of Finance. Ministry of Finance. Ministry of Finance right now it is saying Ministry of Commerce that means option 1 is wrong why it is going like this okay option 1 is wrong right Ministry of Commerce and Industry दीपम Ministry of Commerce and Industry आसीबो कि आसीबोनी ना No, sir. Finance. हां तो बिकॉज़ सेटा हम ऑलरेडी देखिथिले फाइनेंस मिनिस्ट्री रो 6 टा डिपार्टमेंट थिला राइट कोन के कहबो फर्स्ट इकोनॉमिक अफेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देन देयर विल बी फाइनेंशियल सर्विस जो दिरा हमें बैंक बोर्ड ब्यूरो रो तार जो हेड वगैरह हबो किए मैनेजर हबो कोन हबो सेगुडा सब देखिया भाई फाइनेंशियल सर्विस फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देन देयर विल बी डिपार्टमेंट ऑफ
This one, investment and public asset management, that is called DIPAM and DPE. Hongi nahi? Yes. Okay. So if you know this, this is related to pillar 2 budget wala discussion mein kotha hotile. So 1 is wrong. Done. DIPAM is mandated. DIPAM, sorry, I am getting some issue. DIPAM is mandated to facilitate monetization of non-core assets of central public sector undertakings. Monetization of non-core assets of central public sector undertakings. See, DPE was there. जो थी आमे कहउतले कोन से माने कोन करबे जो एम्प्लॉयमेंट मानन को एम्प्लॉय जो माने अछन से मानर ट्रेनिंग से मानकर से जो स्किल डेवलपमेंट से तिरे हेल्प करिवे प्लस दैट वाज रिलेटेड टू हेवी इंडस्ट्री होंगी नहीं कोर वाला. Then DIPAM is mandated to facilitate monetization of non-core assets. See, monetization, asset management, correct? No. See, बुझियो कि ना बुझियो नहीं. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So here I was saying, whenever you are saying asset management, that means it is related to investment, disinvestment, right? No. And तबे कहते हैं monetization करूचा. तो disinvestment कले तो monetization करिवो. Public asset management, investment and disinvestment. तो सही चीज़ तो हमारे पास ठीक है. This is related to non-core assets of central public sector undertaking. So option 2 is correct. So only B. Fine. Sir, non-core asset ta kaun sir? See, there will be non-core assets. There are certain core industries, right? Total 8 core industries are there. Yes, sir. Correct? No. Yes, sir. जो public sector order, we have DPE also. Okay. So DPE previously agro सेटा कोथि आस्तला heavy industries under रे. Then से मान देखिले नाही actually DPE रो जो काम जो skill development वगैरह हला से गुडा तो आमे फाइन ता पई भी पैसा दवा को पडुचे का फाइनेंस मिनिस्ट्री को. तो ताकू आमे काहे कि हेवी इंडस्ट्री अनुसार रखे आमे ताकू फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर को ने दैट विल बी अनदर डिपार्टमेंट जे कि सब कोर रिलेटेड कथा ओडा देखुला. तेनु दीपम रे कोन हला जो नॉन कोर सेक्टर ओडा रहला जो आठटा हमर कोर जिंस नुह तार डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह केमिति होबो से सब जिंस देखिया पई दीपम को रखा है जी. सो दीपम इज मैंडेटेड टू फैसिलिटेट मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. जो सी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मींस companies, correct? No. Public sector undertaking, those are the companies. See, there are statutory body, there is departmental, like joda government department, for example post, railway, those are government related, right? Then there will be statutory related companies like SBI वगैरह है वाला होंगे नहीं. Yes. Then there will be PSU रे कौन कौन सा public sector undertaking जो for example ONGC, right? Yes. Sir, बुझिलो sir. Okay. Next, 67. Which of the following raw material are used in steel industry? Okay. Steel industry. कौन raw metal? Phosphorus, carbon, iron ore, limestone, oxygen. What do you think? I don't know to करो. Phosphorus use करो steel industry. हाँ See, sir. carbon, iron ore, limestone, oxygen. ये सब तो निहाती दरकार. Now just tell me whether phosphorus. Yes, sir. No. Yes, sir. हुए. A small quantity of phosphorus, right? Yes, there is sir. nothing to do with economics on this, but you should know the fact that in steel industry there will be a small amount of phosphorus we use. Carbon, iron ore, limestone and oxygen we use because this will cover from your that mineral sector of geography, right? That's why if you see the geographical location of the steel plants, right, they will be near to the area where there will be iron ore. For example, you talk about Raurkela, that is near to that Badam Pahad. Yes, sir. Raw material रो माने पाखरे था. Heavy industry, no? So Badam Pahad. Yes, sir. केउझर सेठु तुमको मिल जो कोन आयरन और लाइमस्टोन. कार्बन पाई तुमको कोयला कोठु मिल जो अनुगुल रु काल से. Yes, sir. एंड ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो दरकार तुमको काहे ना ऑक्सीजन हेले तो निया पाइबो ना गरम केमति करियो तो राइट. सो देयर विल बी स्मॉल अमाउंट ऑफ phosphorus is also required. Okay, basically which will try to use like help in the ductility of that
steel. Okay, strength भी दबा, hardness भी वगैरह दबा, सेगुड़ा पे little amount of phosphorus is required. Okay, so the answer will be D. Correct. Okay, now consider the following statement with reference to the logistic interference platform. ULIP mu आज ही पढ़ोगे, right? Yes, sir. तो लॉजिस्टिक पोर्ट लॉजिस्टिक ऊपर हमें कथा होले पोर्ट सागरमाला. See, there will be Yes, different sir. Bharatmala. correct, Sagarmala and Bharatmala, right? Yes, sir. Okay, now consider the following statement with reference to the unified logistic interference platform, that is ULIP. It enables the information exchange on a real-time basis amongst the all stakeholders in the logistics sector. It is being implemented by the National Industrial Corridor Development Corporation Limited, NICDC. Logistics, okay, forget about this. Logistics is a hackathon organized under the ULIP. Which of the following statement given is correct? So basically, आप तुमको पूरा clearly जानिए पड़ेगा what is actually ULIP is doing. Okay. So जब हम देखो ULIP, which is nothing but Unified Logistic Interference Platform. Correct? तो तारा काम कौन? Anyone? ULIP रो काम. Anyone knows ULIP रो काम? See, जदि तमे कहू छ भारतमाला अनुसार हमें कौन करूचे डिफरेंट रोड गुडा को कनेक्टिविटी दोचे, राइट? सागरमाला थ्रू रे Yes, sir. डिफरेंट Port पोर्ट ru. को कनेक्ट करूचे. सो मल्टी मोडल हमें गोटे पढिथिले, व्हिच इज दैट सिटी व्हिच Yes, हैज sir. मल्टी मोडल फैसिलिटीज. Varanasi, sir. Correct. So Modi is trying to develop his own constituency Varanasi for multimodal transportation. And multimodal रे तमरो कोन आसीयो चारटा ट्रांसपोर्टेशन? Airways, roadways, tapre waterways, railways. Correct. So there will be waterways, there will be airways, there will be railway and roadways. So for roadway we have that Gati Shakti and all, right? Okay. Yes. So this ULIP, it enables information exchange on real-time basis amongst all the stakeholder in the logistics sector. That is true. जिते जल्दी तमरो communication वगैरह हबो, right? जदि तमरो communication facility through all these mode of transport, correct? सेटा जदि better थिबो ताले तुमको real time basis रे जो माने stakeholder अछंती, for example से channel रे जो माने transportation रे help करूछंती, so they will get or they will enable information exchange. That is true. It is being implemented by NICDC. Okay, for this you have to know the fact that okay, this is actually implemented by NICDC. सेटा तो तुमको जानियो पड़ियो. Okay, so National Industrial Corridor Development Corporation Limited, National Industrial Corridor Development. For that, if you see, we have lot of green corridor also, right? Food park वगैरह में तैयारी करिया पे आमे गोटे corridor तैयारी करू. For example, आमे भाबिने आग्रा रु नै कि गोटे corridor तैयारी करूछु कोठी की ना गुजरात को, या फिर गुजरात रु नै कि आमे गोटे corridor तैयारी करूछु मुंबई को, मुंबई रु नै कि आमे बेंगलोर को, बेंगलोर रु चेन्नई को, चेन्नई रु अहमदाबाद को, sorry not अहमदाबाद, that विशाखापट्टनम को, विशाखापट्टनम रु कोलकाता को, देन कोलकाता रु दिल्ली को. सो एई सब जो जिंस कॉरिडोर होगा एगुडा की काम करे implemented by National Industrial Corridor Development Corporation Limited. So this ULIP, which is nothing but Unified Logistic Interference Platform, is also being implemented by whom? NICDC. Is that clear? So option 2 is also correct. Fine. Okay. So then logistics, right? Logistics, which is a hackathon organized under the ULIP. Okay, so you have to remember that there is a department called DPIIT, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, correct? So DPIIT Yes, sir. will help to create one hackathon logistics. Okay, this is correct. It is not S, it is X. So logistics, what is hackathon? And what is hackathon meant for? Anyone? Hackathon काहे की यूज करा? तो छोटा प्रोजेक्ट दिया जाए कॉलेज पिले माननको तो माने करंदे शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम रे तो सामान देखो प्रोजेक्ट को ये करंदे. Correct. Basically there will be problem statement will be given to a group of students. So सेमाना भितर different group बांटी जेती. Let's suppose 4टा group दिया अछि, सेमाने hackathon रे पार्टिसिपेट करिवे. So through hackathon we will give one project statement
and problem statement सेटा को सेमाने केते कम टाइम भितरे मे बी हे पारे थ्रू कोडिंग और थ्रू देयर skills and knowledge whatever they can apply they need to solve that problem and who can give the best solution they will get awarded correct no hongi nahi Yes. Yes, sir. Yes. so department of promotion see here we are saying promotion for इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड तो से माने कोन करंदी कि ठीक अछि हम गोटे हैकाथन बने देबु कॉलेज मानकर ताकू कहबु कि ताकू गोटे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देबु कि आउ केमिति बेटर हेई परिवो ए जो डेवलपमेंट वगैरह ताकू हमें लॉजिस्टिक ए जो ताकू हमें केमिति रियल टाइम बेस रे तारो डाटा वगैरह प्रोसेस करी कि बेसिकली ट्रैफिक कंजेशन वगैरह सब किछि देखि कि हमें ताकू क्लियरेंस बहुत जल्दी दे परिबु एकरे सेटा जाई परिबो लॉजिस्टिक रे तमे कहि परिबो कि ठीक अछि केते इजीली से मानकर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेशन को हमें अधिक रु अधिक बढ़ी दे परिबु तो लाइक थ्रू कोडिंग फॉर एग्जांपल कोडिंग रे मु कोन कहबी फॉर एग्जांपल दिस इज ओनली वन वे राइट एंड मते बहुत सारा जिंस पठेवार अछि गाड़ी वगैरह चलीवार अछि एंड मते रियल टाइम रे डाटा दरकार कि ट्रैफिक कंजेशन कोन अछि फॉर एग्जांपल ए रोड टा ब्लॉक अछि ना ब्लॉक नहीं ये सब डाटा मते रियल टाइम दरकार एंड यू नो गूगल मैप करेक्ट नो तो बर्तन कथा कि गूगल मैप रे जदि मु आपको इंटीग्रेट करि परिबे एंड गूगल मैप मते कहि दे परिबो कि ए रोड रे गले मते केते समय लागियो एंड दिस बिकॉज़ दिस इज ए हेवी व्हीकल राइट बिकॉज़ मते ट्रांसपोर्टेशन करियार अछि दैट टू गुड्स करेक्ट नो तो मे बी ए रोड ता मते ठीक रहइबो या ठीक रहइबोनी एथिरे ट्रैफिक कंजेशन केते अछि या फिर मते जदि आ गोटे रोड मिलला सेठी मु कहबी कि नै ए रोड ता बेटर अछि सो देयर माइट बी सम प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई एम जस्ट गिविंग वन टाइप ऑफ एग्जांपल okay where they can use their ability of coding and development skill correct where they can bring some solutions so that is what hackathon is all about and through ulip there is logistics so whatever you need to remember see there might not be a direct statement like this there might be a statement like logistics okay is organized under what then in the options there will be ulip then there will be 3-4 other options then you should know okay this logistics is related to ulip is that clear and which is the department which will try to help dpiit which will be under the commerce ministry Commerce Ministry. Yes, sir. see that's what it is important you should not write okay ulip is related to some finance ministry this is under commerce ministry clear Yes. okay so these 1 2 3 are correct so 1 2 3 next 69 the government of india has launched e-amrit portal 2 yeah anyone e-amrit this is related सर एटा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विषय okay Yes, sir. electric mobility so this is related to electric vehicle right e-amrit यस सर adoption of electric vehicles वगैरह जो हमें गुडा को एक्चुअली मु आसुरी पर्यंत क्लास गुडा कनु नहीं राइट vehicle related so से गुडा जतले आसीयो मु कहबी e-amrit portal so एथिरे कोन हुए कि गवर्नमेंट कहू कि ई व्हीकल काहे की रिक्वायर्ड again to decrease your import of crude oil होंगे नहीं Yes, if sir. you see the Yes, sustainable sir. development goal also we require to help in the climate change right पोल्यूशन को climate ପାଇଁ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନା because you Yes, are sir. doing the carbon emission through the crude oil consumptions right so go for the electric vehicle and if you talk about your what do we say balance of payment right if you decrease the import of crude oil then that you can decrease how through e-vehicle तो आजिर जदि तुम देखो आजिर गोटे रिसेंट मोदी କରିଛନ୍ତି ना ଏବେ ଗୋଟେ से जो 15 अगस्त रे से बहुत सारा स्कीम लॉन्च करोछନ୍ତି तो आज 10,000 buses will be supplied right जो कि something 57,000 Yes, crore sir. खर्च हो and that 10,000 buses will be nothing but electric buses Yes, sir. correct so that will happen through this e-amrit because by 2070 we should go for net zero emission होंगी नहीं Yes. see this is Yes, what sir. our aim is net zero emission and China's aim is 2047 superpower okay anyway so this is related to create awareness about electric mobility hope it is clear
It is nothing related to education courses. It is nothing related to generation of urban forest cover. Nothing related to Jal Jeevan Mission. See, Jal Jeevan Mission, Jal Shakti. Correct? No. Anyway, PM Pranam. yes sir माने फर्टिलाइजर को केमती कम यूज करबा और नेचुरली केमती को मैं फूड प्रोड्यूस करबा सेटा प्रणाम स्कीम रे Means it will go for organic productions more, right? Yes, sir. yes sir Yes, sir. It aims to reduce the government subsidy burden on the chemical fertilizers. Correct? Chemical Yes, fertilizer. Yes, sir. Yes, bio biological जो हमारा अच्छी गोबर वगैरह, right? Yes, sir. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सर हाँ, ताकू हमें अधिक यूज करें. It will provide grants based on the change in urea uses in a state in previous year. Okay, let's see. A separate fund has been created under National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) to finance the scheme. NABARD चला गया ठीक? They won't have any national. See, इतने कथा होती कि PM प्रोग्राम में तुमको तो पैसा ही दो, then तुमको फंड कौन दरकार है वो एक्स्ट्रा. एठी जो सब्सिडी तुम कहूछ कमेवा पई देन फंड तुम तैयारी करिया पई सब्सिडी जदी तुम कमेवा को चाहो हां तुम कहू तो हां सब्सिडी हमें दबो देन क्रिएट ए फंड. करेक्ट नो? सर एटा जो सब्सिडी टा डायरेक्ट फार्मर का अकाउंट को न जाई डायरेक्ट जो रिटेलर का अकाउंट को सेठी जीवो. ओके. सर एटा इफको अंडर रे तो जाउछ ना एटा नाबार्ड तो मेंशन ही नथले. Correct. This is not related to NABARD. Okay. So again, these things, it requires how much your understanding on this particular scheme. Okay. So PM Pranam, just you need to know from the prelim perspective that okay, we need to do what? We need to reduce the government subsidy, and if you are reducing the subsidy burden, that means you are helping the fiscal deficit to go down. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Otherwise, the more subsidy you will give, the more fiscal deficit will happen. Correct? No. Okay. And more Yes, sir. subsidy, more inflation also. हवा ना वाली subsidy रे तो पैसा दो market yes रे sir अधिक indirectly पैसा indirectly it will lead to inflation also, right? yes Yes, sir. Yes, sir. So 3 won't be there. If 3 won't be there, then all 3 are gone. Then only A. So 1 and 2. So it will provide grant based on the change in urea wages in state in previous year. So based upon the urea wages, जदि तमे कमे चलेला ताल तुमको एक्स्ट्रा ग्रांट मिलबो. जोटी तुमको सब्सिडी सी स्टेट रो जदि सब्सिडी कमिला स्टेट को यूनियन को जदि सब्सिडी बेसी दबाउ पडुनी ताले से कहिबो ना कि सब्सिडी मु काहे कि देबिनी तमे जदि फर्टिलाइजर कमेबो, राइट? एंड जदि तमे फर्टिलाइजर कमेबो लोक कमे देबे कि कमेबेनी देन तांको किछि गोटे तो दरकार देन यूनियन कहबो ठीक अछि जदि तमे कमेबो ताले हम तुमको एक्स्ट्रा ग्रांट देबो. तो जो थिबे कि लोक कमेबे एंड स्टेट को यूनियन को सब्सिडी दबाको पड़िबो. फॉर एग्जांपल सब्सिडी रे से 100 टका देतांदा एंड देखला 100 टका तार रहिला ठीक अछि मु 25 टका तांको दे दिए खुशी जाओ रे कम दे एटलीस्ट 75 तो यूनियन में पहुंचला होंगे नहीं. yes sir sir indirectly sir environment को भी harm होनी. Correct. So PM Pranam very important. It is related to agriculture sector. Okay. Fine no. See Pranam पढ़े आसो जो जना पड़ला कि तमे आउ को सेक्टर रे लगो. So this is related to agriculture sector. Hope it is clear, right? Okay. Consider the following statement with reference to the index of 8 core industry. 8 core industry. It is related to the National Statistics Office (NSO). Refinery products have the highest weightage in the index. It includes all items including the index of industrial productions (IIP). Is there anyone? Any more else? 71, 72. Oh. Which of the statement given above is or are correct? So, tinta statement. Okay. It is released by National Statistics Office. Is that correct? sir central No, sir. statistical officer CSO sir एटा NSO Okay. नहीं. So, NSO is related to CPI, right? yes sir consumer WPI pay? yes sir WPI pay क्या था? yes okay CPI Consumer Price Index ता पे NSO था. yes WPI रा डाटा के लिए
economy advisor. Advisor, yes. NCID. Okay. So for NSO, 8 core industry related se kichi diyeni. So this is wrong. Okay. Now, refinery products have the highest weightage in the Yes, index. sir. Yes, it's true, sir. Okay. So the first one is refinery product. Second will be the electricity. E তারপরে steel, Then steel. coal, sir. Coal. Then coal. Then Crude oil. crude oil. তারপরে sir gas, natural gas, sir. Natural gas. Natural gas. Then cement and fertilizer last. তারপরে last fertilizer, হ্যাঁ। So the thing is, first one is refinery product, then electricity, steel, coal, crude oil, natural gas, cement and fertilizer. Fertilizer is the least. Okay. So what is the then this is correct, right? Then it includes all the items included in the index of industrial production, IIP. IIP रे बहुत सारा दिला, right? IIP, all the goods and services, right? Sir, ठीक ଅଛି ବୋଧେ IIP ଏସବୁ ଜିନିଷ। See, it includes all the items. We are talking about the reference 8 core industry. We are talking about core industry. It includes all the हाँ items. sir, core IIP industry तो तो बहुत सब सारा जिनिस अछि। ए core छाड़ी देला पर because IIP is related to the quantity of production, right? It is not related to the price of production. इथरु तुमको मिलिबनी केबे inflation market रे कोन अछि CPI WPI इथरु तुम inflation calculate कर परिबो IIP रु तुम केबे inflation calculate कर correct? No, that will be related to quantity of production in the market, right? And production of what? Goods and services. Mane paduchi? See, I told about something related to CPI, I told something related to WPI, I told something related to PPI, right? Then Yes, sir. SPI and IAP. CPI consumer price index, right? Goods and services both. WPI only goods. Yes, sir. PPI goods and services. SPI only services. Service prices, right? IAP, it is not related to price index, it is related to quantity of production of goods and services. So this IAP has a broader term, it has lot of items, but here it is saying 8 core industry include all the items. This all is a wrong word. Okay, so 3 is wrong, so only B, so answer will be 2. Second one. Is that clear? yes sir. Okay, give me a second. No? I'm getting on call. Am I audible? Yes sir. Let me reshare. Okay, is my screen visible? Yes, sir. Yes sir. Okay, so the next question, it is an economic activity of the infancy stage that shows the potential to grow rapidly in developing market.
It is characterized by high growth rates and numerous startup establishment, which an abundance of venture capital investment. Which of the following best reflects the description above? Sunrise है. Sunrise. Sunrise. Okay. What is this sunrise? जो इंडस्ट्री रे आगु को माने बहुत डेवलपमेंट होबार अछि. Grow rapidly. For example, tourism sector गोटे कहि परिबा sunrise industry. सपोज सर फूड प्रोसेसिंग किंबा हमें जो रॉकेट वगैरह तैयारी होची सेटा स्पेस. Okay, so basically there are, if you see sunrise, there will be also some industry called sunset industry, right? Having less profit, not going to sustain for long run. Correct? No. Yes, sir. So it is now says that shows potential grow rapidly and rapid grow. So there will be sunrise industry because now it is saying rapid growth. Okay. Developing in the developing matter, it is also characterized by high growth rates and numerous startup establishment. Okay, so the startup establishment वगैरह होची, then rapid growth होची, then funding वगैरह, and जेहेतु rapid growth होची, obviously सेमानकु more and more funding मिल जाए, right? Capital fund that will through venture capital investment. Okay, Yes. correct? No. So this is a direct straightforward question, but anyway, this is done. 73. Which of the following statement best describes the term hard landing? See, such kind of term, no, I don't think it will come in the exam also, because in UPSC also you won't find these kind of terms. Current affairs people, they will bring किछि गोटे भी आसीबो जदि न्यूज रे सेमान नै आसीबे ठीक, and question paper रे question आसीबो. Basically these kind of questions you will find in the mock test only, not in the real exam. Okay, fine. So hard landing, anyone knows what is hard landing? Sir, Sometimes economic slowdown, it refers to hard landing. Economic slowdown, a situation when there is a economic slowdown followed by a period of rapid growth. See, बहुत ऊंचा पड़ेछ, then खसुछ, correct? No, कष्ट हो ना मानी. Yes. Okay. Then an economic condition where government slows down growth in order to control inflation. It is not related to anything related to inflation. An economic cycle characterized by slow growth, a high unemployment rate and rising inflation. See, high unemployment rate and rising inflation. Inflation बढ़ुची and unemployment. That is related to stagflation, right? See, this concept you need to know. The question might come related to this stagflation. What is stagflation? Unemployment भी अधिक, rising inflation भी अधिक. Means inflation एते मात्रा रे अधिक कि unemployment हे गला. आलू किलो जोटी 10 टका दिला बर्तमान जदी 1000 टका हबो, लोक आलू किनिबेनी ना. हो कि नहीं? जेहेतु किनिबेनी, ए सेक्टर पे माने काम करथि, से माने काम करिया छाडी देबे काइना, से माने प्रोडक्शन जदी करिवे भी तारे लोक किनु नांदी. जेहेतु लोक किनु नांदी, से काम करिया छाडी. So high rate of unemployment rate. Correct? You remember that Nairu point? There will be a point after that. If there will be a small change, correct? No, in unemployment there will be huge inflation. Yes, sir. Correct? No. Then after that point there will be some little inflation and slowly there will be unemployment. So the inflation अधिक होबनी ताले unemployment भी होबो ना. For example, तुमको इना जदी कहबो कि 1000 टका तमर इना सैलरी होती 15000 टका, and तुमको कहबो 3 वर्ष जाय तमरो सैलरी इंक्रीमेंट होबनी, then unemployment बढ़िबो ना बढ़िबनी. आ कोन से जॉब करी किसी फायदा नहीं. लास्ट ईयर भी जदी सैलरी दिला 1 वर्ष भी सेती ता पर वर्ष भी सेती होंगी नहीं. Yes, sir. So see, in this graph here we are putting that unemployment
and in this side we are putting inflation, correct? No, तो इन्फ्लेशन एपटे जब देखियो कमुची किंतु अनएम्प्लॉयमेंट बढ़िबो जदि इन्फ्लेशन कमिबो ताहाले भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़िबो दैट इज रिलेटेड टू डिफ्लेशन, करेक्ट? जदि अधिक डिफ्लेशन हैला देन अनएम्प्लॉयमेंट and there will be a point too much inflation is related to too much unemployment, that is what we are saying stagflation, correct? No, a prolonged downturn in the economic activity leading to decline in economic output. No, prolonged downturn in the economic activity leading to decline in the economic output, this is related to economic slowdown. Means highly growth hela economy, then economic slowdown hela, this is called hard landing. For example, talk about the before corona period, economy was increasing, growth बढ़ुतिला, then हठात में होचिला, then बढ़िबो, okay, that behaves the economy. But ये जो growth है चिला गोटे rapid growth होतिला and sudden खसी वाला, that is related to hard landing. Hope it is clear. So, Mm-hmm. sir, if I'm not wrong, can we please recheck with the answer that this hard landing, is it to control inflation? Because the term first appeared when the Fed Reserve tried to control inflation to control inflation during the period of recession. They actually slowed down the economy knowingly. That's how the term appeared. But I don't know which context to this. I'm not sure, but I think that could be the answer. Like, to control inflation, government slows down the economic growth of a country. Okay, so you are saying an economic condition where the government slows down the growth of the in order to control inflation. Right, sir. Well, that's what I'm thinking. Like. Okay, then I will just try to research on this because I never get a familiarity on this hard landing much. But whatever I understood is, if the economic growth is sufficiently rising and short time, it will fall down. Okay, so I will just recheck on this 73 and we will be back again tomorrow night. Okay, for this particular hard landing. Okay. Anyway, so I will stop the class here. Okay, and we'll again continue tomorrow gig worker वगैरह. So that we'll see gig worker, that I already told that Uber वाला example, right? Yes, sir. Okay. So anyway, let's meet tomorrow at 9:30 again, and we will continue the further discussions. Okay. Morning class or not? Morning I will take as usual because we are not at over, right? Yes. Thank you. Sir, ଏବେ ଆଉ ରାତି କରିବେ ନା ନାଇଁ? Good night, sir. Yeah. Yes, sir. Hello, sir. Yeah, ma'am. Sir, ଏବେ ଆଉ ରାତିରେ କରିବେ ନା ନାଇଁ discussion? ରାତିରେ Telegram ରେ? Yes, sir. No ma'am, once ଏଇ जो mock test ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଟିକେ ସାରିଦିଏ, ତାପରେ ଯଦି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବି ରାତିରେ, ନହେଲେ ଟିକେ ଏକ୍ଜଷ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଉଛି ବିକଜ ମୋତେ ବି ଟିକେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। Okay, sir. Thank you. ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। Good night.